Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Alizium Public School and College Lodhran. I am Mrs. Shazia teaching you the subject of English. Class 2nd year, it's lecture number 89 and we are about to complete our novel Mr. Chips. Yesterday we have started chapter number 18 and we have done some part of its exercise. Today we will inshallah continue to complete chapter number 18 exercise. We have read complete novel and we have done question answers for all the chapters. Chapter number 18, remaining part of the questions given on your book, and you know the answers very well because these are the questions which have been repeated in the previous chapters also. So yesterday we have done up to question number 10. Today it's question number 11. Draw character sketch of Catherine Bridges. Catherine Bridges was the wife of Mr. Chips. She was a young girl of 23. She had blue flashing eyes, freckled cheeks and long smooth straw colored hair. She was very active and innovative. She had revolutionary ideas and she was radical in politics and she liked Bernard and Ibsen etc. And she made very positive changes in the life of Mr. Chips. Question number 12. Write a short on the views and ideas of Catherine Bridges. Catherine was very broad-minded lady. She was young, energetic and have revolutionary radical ideas. She thought that a woman ought to be got admission to the university. She thought that a woman should be given the right to vote, the right to education. She liked and read Ibsen and Bernard Shaw. She has very broad ideas. And next question is write a note on Mr. Weatherby. Now these are the headmasters of Brookfield School and these are given questions are sequentially about the headmaster. Mr. Weatherby was the first headmaster of Brookfield Schools. When Chips came to join Brookfield School, he met with Weatherby and Weatherby died in the same term before Chips could start his first term with the Brookfield School. He was very fatherly, very courteously. He talked to Mr. Chips and advised him to keep the discipline. The next is write a brief note on Mr. Meldrum. Meldrum is the second headmaster when the Weatherby died and Mr. Meldrum was the successor of Weatherby. He joined Brookfield and took the office for 3 decades. He continued to take the charge of Brookfield as a headmaster for 30 years and Mr. Chips served under Meldrum very comfortably, very peacefully. Next is the write a note on Mr. Ralston. If you have the previews of the chapters, you must remember that Meldrum died. Chips was made headmaster of Brookfield for the first time, and after that, the governors of the Brookfield School brought a young, energetic person called Mr. Ralston. Ralston is sequentially the third headmaster of Brookfield after Chips joined, and if we consider Mr. Chips also, so he is the fourth on the number. Ralston was a young man of 37. He was quite energetic. He was a live wire who can transmit his energy to the others. His career was glittering with first and blues, and he has the personality that could reduce the big hall to silence by mere lifting of an eyebrow. अपनी आंख के इशारे से पूरे हॉल को चुप करवा सकता था. Mr. Chips didn't like Ralston and Ralston also didn't like Mr. Chips. Next is write a brief note on Chartres. Ralston stayed in the Brookfield for a very short time. When Ralston left, the administration brought another headmaster, Chartres. He was fatherly, he was very courteous, very polite. Chips served under Chartres also, and when Chips retired and First World War started, Chartres got ill and he requested Mr. Chips to rejoin. At the request of Chartres, Mr. Chips rejoined again. Then, after the death of Chartres, Mr. Chips was made the headmaster of the school, and Mr. Chips resigned again on 11th November 1918 when First World War ended. Until there, they have mentioned the headmaster, the first Weatherby, then Meldrum, then Mr. Chips, Ralston and Chartres. Chartres के बाद फिर Mr. Chips थे और Mr. Chips की रेजिग्नेशन के बाद Mr. Chips जब मिसेस विकेट के यहाँ आ गए तो फिर मजीद हेडमास्टर्स का तारुफ हमें नहीं करवाया गया. आखिर में चैप्टर नंबर 18 में जब मिस्टर चिप्स की डेथ होती है तो एक और हेडमास्टर जिसको उसने न्यू हेड कहा था चिप्स ने, कार्टराइट,
उसके बारे में क्वेश्चन नहीं है, ना ही कभी बोर्ड में आया है, लेकिन आपको नोटिस होना चाहिए कि जब मिस्टर चिप्स जो है वो इंटरव्यू के लिए आए तो वेदर बॉय थे। जब मिस्टर चिप्स ने अपना करियर स्टार्ट किया तो मिस्टर मेल्ड्रम थे। मेल्ड्रम की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स हेडमास्टर बने। उसके बाद राल्स्टन आए, राल्स्टन शॉर्ट टाइम रहे, चले गए, और चैटरस हेडमास्टर बने, और चैटरस ने फिर मिस्टर चिप्स को कहा कि वो रीज्वाइन करें। और जब मिस्टर चिप्स छोड़ गए तो आखिर में 15 या 20 साल बाद जाके आखिर में हमें दोबारा से एक और नए हेडमास्टर का सिर्फ नाम पता चलता है। वो कौन था, कैसा था, कितना अरसा उसने ऑफिस संभाला, इसका कुछ भी मेंशन नहीं है। उनका नाम है कार्टराइट, CARTWRIGHT, कार्टराइट। ये उस वक्त की बात है। कार्टराइट का तारुफ हमें चैप्टर नंबर 18 में मिला है, जब मिस्टर चिप्स बेहोशी से वापस आते हैं और डॉक्टर मैरीवन उनको चेक कर रहा होता तो उस वक्त मिस्टर कार्टराइट वहाँ पे खड़े होते हैं। या कार्टराइट के बारे में इतनी सी और बात है कि उन्होंने मिसेस विकेट से कहा था कि उन्हें अफसोस है कि चिप्स की शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं थे। दिस इज ऑल अबाउट हेड मास्टर्स ऑफ द स्कूल, ब्रुकफील्ड स्कूल। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन किस वक्त था, वेदर बॉय, मेल्ड्रम, देन मिस्टर चिप्स। यहाँ पे ड्यूरेशन के दरमियान में राल्स्टन, चैटरस एंड अगेन मिस्टर चिप्स, एंड आफ्टर मिस्टर चिप्स न्यू हेड वाज कार्टराइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिसेस विकेट। मिसेस विकेट कौन थी, क्या थी? सॉरी, मिस्टर मैरीवेल। मिस्टर मैरीवेल was the doctor of Mr. Chips. He took care of him, he prescribed him medicine, and he visited Chips after fortnight. हर 15वें दिन he was pleasant looking person, and he was a very pleasant personality. He was quite jolly as well. Next, write a brief note on Mrs. Wicket. Mrs. Wicket was in charge of the Leland room at Brookfield. After retirement, she made a house in front of the school across the road, and Mr. Chips stayed at Mrs. Wicket's as a paying guest. She served Mr. Chips, and she also talked to Mr. Chips, and she was very kind and nice lady. This is all about the exercise question answers which are written at the end of the novel about the whole novel. Now next, additional question also, there are also in your book additional question answers. I have selected only 2 which have been repeated in the Multan board. Question number 16 है from the additional exercise. A decent career decently closed, what does it mean? ये फ्रेज है मिस्टर चिप्स के अंदर आखिर में, अ डिसेंट कैरियर डिसेंटली क्लोज, इससे क्या मुराद है? 2 मुराद है। नंबर 1, टीचिंग एज अ वेरी डिसेंट कैरियर, एंड डिसेंट क्लोज का मतलब है ही resigned very peacefully, and he then again keep in touch with the Brookfield school. So this was the very decent career of teaching, and Mr. Chips successfully completed, and he became popular. He gained popularity. He earned the reputation of being a great jester, as a great teacher, and he was well rooted in the Brookfield. He remained well connected in the Brookfield, and he completed his teaching period very peacefully, and after the full completion of the teaching period, he retired at the age of 65. Again he rejoined Brookfield, and again he resigned. This is the recent career decently closed. Why is Goodbye Mr. Chips called a biographical novel? ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी नॉवल, बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री लिखना। तो मिस्टर चिप्स, गुडबाय मिस्टर चिप्स इज अबाउट द लाइफ हिस्ट्री, is a professional, personal and journal life of Mr. Chips and his financial conditions, etc. Because this novel is about the life history of Mr. Chipping. So that is why this novel is called biographical novel. Then again a question comes in the बोर्ड पेपर्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द जेम्स हिल्टन? आप जेम्स हिल्टन के बारे में क्या जानते हो? जेम्स हिल्टन कौन है, कौन थे, क्या रोल है इनका मिस्टर चिप्स के नॉवल के राइटिंग में, क्या है इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में जाता है, तो उसका कंप्लीट आंसर मैंने आपको लिख दिया है। जेम्स हिल्टन वाज बोर्न ऑन 9 सितंबर 1900 इन लैंकाशायर, इंग्लैंड। जेम्स हिल्टन जो शख्स है जिन्होंने ये नॉवल लिखा है वो 1900 में लैंकाशायर, इंग्लैंड में पैदा हुए। ही डाइड ऑन 20 दिसंबर 1954 इन लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया। 1954 लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में 20 दिसंबर को उनकी डेथ हुई। ये तो उनकी अपना लाइफ स्पैन बताया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में लॉस्ट हॉरिजॉन एंड गुड बाय मिस्टर चिप्स आर द मोस्ट फेमस बुक्स ऑफ हिम। नॉवल राइटर थे, बुक्स लिखते थे, तो उनकी 2 बहुत फेमस बुक्स हैं, लॉस्ट हॉरिजॉन
और गुड बाय मिस्टर चिप्स जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। He was the son of John Hilton, the headmaster of Chapel and School in Walsman. वाल्समन में चैपल एंड स्कूल के हेडमास्टर जो है जॉन हिल्टन, वो उसके फादर थे, यानी उनका बेटा था। हिज फादर वाज वन ऑफ हिज इंस्पिरेशंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर चिपिंग। तो मिस्टर चिपिंग का जो कैरेक्टर नॉवल क्रिएट किया है, उनकी इंस्पिरेशन जॉन हिल्टन को अपने बाप से मिली थी। और ये वो जेम्स हिल्टन है, जेम्स हिल्टन जिनके फादर जॉन हिल्टन थे। जॉन हिल्टन के कैरेक्टर को ही उसने थोड़ा सा कलर दे के मिस्टर चिपिंग का कैरेक्टर बनाया है और ये नॉवल लिखा है जो आपके सिलेबस के शामिल है। इसके साथ ही आपका बुक का टेक्स्ट बुक का ये पार्ट नॉवल वाला कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम अपना रिमेनिंग पार्ट ग्रामर का कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।